is 5 gas, LEL, O2, H2S, CO, PID. LEL is IR sensor, PID means VOC, H2S, CO is toxic sensor, O2 is electrochemical, and it's a long life O2 sensor. How can we turn off? You have to long press the power key. So countdown timer will start once you long press the whole power key. एक बार 1 डाउन खत्म हो जाता है, आप छोड़ दीजिए. Similarly, we can start by long pressing the power key. एक वाइब्रेशन आएगा एंड उसके बाद you have to leave it. So it will start. So it will self check. So first ये स्क्रीन टेस्टिंग हो रही है अभी. फिर पंप टेस्टिंग होगा. यहाँ पे मुझे इनलेट ब्लॉक करना है एंड नाउ अनब्लॉक के लिए अभी ये मुझे पैनिक दबाना पड़ेगा. ओके, जस्ट टू चेक द बटन. पंप हैज पास्ड द टेस्ट. सो नाउ इट विल स्टार्ट द नॉर्मल बूटिंग, डेट एंड टाइम. serial number and other details. Since it is a wireless module, वायरलेस इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें ब्लूटूथ और सारे जो वर्जन्स रहेंगे वो इसमें दिखाएंगे ऑन स्टार्टअप. ये वायरलेस जो वर्जन है उसके मैक आईडीज और ये एड्रेसेस. कैलिब्रेशन किए हुए कितने दिन हुए हैं वो दिखाएगा. मीथेन गैस, हाई लो अलार्म, स्पान वैल्यूज, VOC PID sensor, high low alarm, STL TWA values, span values. Similarly, H2S toxic gas, high low alarm, STL TWA span value. Same for CO. O2. फ्रेश एयर में एक बार ज़ीरो कर लेना ज़रूरी है. सो वी विल प्रेस एंटर. ये ज़ीरो प्रोसेस होगा. इंस्ट्रूमेंट स्टार्टअप होने पे एक बार आपको फ्रेश एयर में ज़ीरो कर देना है, सो दैट ऑल द सेंसर्स आर सेट टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस वेयर देयर इज़ नो टारगेट गैस प्रेजेंट, ओनली ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर. ये ज़ीरो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. और ये होम पोजीशन पे आ गया. योर इंस्ट्रूमेंट इज नाउ रेडी टू यूज. यू कैन टेक दिस इंस्ट्रूमेंट टू द फील्ड एंड यू कैन डू द सैम्पलिंग इन वर्क स्पेस और in whichever area you want to sample. Thank you.